So let us begin with the today's lecture. In the last lecture, we discussed about the various symbols for the register transfers. इसमें मैंने आपको बता दिया था that the registers are referred to as capital letters. Parentheses are used to reflect the part of the register. Arrow is used to denote the transfer. Colon is used to denote the control function, and comma is used to denote in case if you want to execute multiple operations at the same time. So there is a very brief topic that we are going to discuss in the coming time, that is the different micro operations that we can perform and that can be designated using the register transfer language. So we are not going to discuss how those micro operations are actually performed by the circuit formation. I don't think that is mentioned in your syllabus. So we are just going to list the micro operations that we can perform or the instructions that we can give. So let us begin. So the first one is known as bus transfer in RTL. So what is the meaning of bus transfer in RTL is when you want to transfer some data from one register to another register, then that data sometimes is not directly transferred but is first placed on the bus, and from bus it goes to the other register. Right. So have a look at the example that is given. Depending on whether the bus is to be mentioned explicitly or not, आप mention करें या ना करें, but the bus will be used to transfer the data. You might be remembering that we have three types of buses. One is known as data bus, one is known as control bus, and the third one was known as address bus. Okay. So right now what we are talking about is the data bus. Now if I look at this very you can say symbol, that is R2, and we are transferring the content from R1 into R2, that is enough. So this is how we represent that we want to transfer the contents of R1 register into the R2. So the contents of R2 will be replaced. That is perfectly all right. But the same thing can actually be in more detail written like this as shown below. That is, R1's content do not directly go into R2, but instead the contents of R1 are first placed into the bus, and then the contents of the bus are placed into R2. So what we want to say is that the content or this particular micro operation is actually executed through these two micro operations. So what we call it bus transfer in RTL. This is a register transfer through bus, right? So this is the first instruction that you can kindly note it down is being executed, and this is how we represent it in the form of RTL language. The second is a memory transfer. So what is memory transfer? जब हमने पिछली instruction देखी है तो we were transferring the content from R1 into R2. इसका meaning क्या था कि only the registers were involved. But here in the next instruction that we are going to study, the memory is also involved. So let us first take a brief intro of what exactly I mean by it is. Collectively, the memory is viewed as a register level as a device. We can denote it, the memory can be denoted as capital M. Since it contains multiple locations, then we must specify the address also. अगर मैं memory की बात कर रहा हूँ तो okay, this is how the memory is looking linearly. So I can denote it as mem. M अगर मैं इसके यहाँ पर कोई वैल्यू पड़ी है तो I also need to define the address where the value is
deciding. So how we do that? We do that by the concept called indexing. हमें उसकी इंडेक्सिंग करनी पड़ती है, हमें बताना पड़ता है कि कहाँ से वैल्यू को उठाना है. Memory is usually accessed by the computer systems by putting the desired address in a special register called the MAR or simply an AR. तो आप कहाँ से डेटा को उठाना चाहते हैं, आप उसको MAR रजिस्टर के थ्रू या AR रजिस्टर के थ्रू रेफर कर सकते हैं. तो अभी आपको सिर्फ इतना बताया गया है इन द होल एक्सप्लेनेशन इन दिस स्लाइड इज that how we can define the address of any memory location from where we want to either read the data or we want to perform the write operation. या रीड करना चाहते हैं या आप राइट करना चाहते हैं, राइट. So when the memory is accessed, the contents of the MAR get sent into the memory unit's address line. Obviously address line को हम लोग address bus भी बोल सकते हैं. तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका एड्रेस रजिस्टर है. जो भी एड्रेस आता है वो मेमोरी यूनिट के थ्रू हमें पता चल जाता है. मेमोरी यूनिट को हम ट्रांसफर कर देते हैं. Then you have data out, data in, read and write lines. आप रीड करना चाहते हैं, आप राइट करना चाहते हैं. डेटा आउट हो रहा है या मेमोरी में डेटा इन हो रहा है. अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? We want to see what instructions are executed in terms of memory transfer. अब उसके ऊपर ध्यान देना है और आप नोट भी कर सकते हैं. So the first is memory read. This is we want to read the contents of the memory. हम लोग मेमोरी के कंटेंट्स को रीड करना चाहते हैं. तो उसके लिए टू रीड द वैल्यू. रीड का मतलब क्या है कि मेमोरी से डेटा कहाँ जाएगा? रजिस्टर के अंदर, राइट. वी वांट टू रीड द कंटेंट ऑफ द मेमोरी. टू रीड द वैल्यू फ्रॉम अ लोकेशन इन मेमोरी and load it into register. The register transfer notation looks like this. ये given है. So what does MAR stands for? This is important. M stands for memory, and parenthesis means which part of the memory or which location of the memory you are referencing to. So when I say M, that means memory, and MAR refers to the memory address register. That means मैं memory के उस location की बात कर रहा हूँ जिसकी value MAR register के अंदर दी गई है. उसमें जो भी value पड़ी है, I want to transfer that into the register R1. And this operation is known as memory read operation. This causes the following to occur. The contents of the MAR get sent into the memory address line, right? Then read is equal to 1 get sent into memory unit. सबसे पहले जो आपका एड्रेस है वो मेमोरी एड्रेस लाइन में चला जाता है. रीड ऑपरेशन 1 हो जाता है. इसका मतलब क्या है कि आई वांट टू परफॉर्म द रीड ऑपरेशन. तो राइट की वैल्यू कितनी होगी? राइट की वैल्यू 0 होगी, रीड की वैल्यू 1 होगी. तो इसका मतलब मेमोरी यूनिट को पता है कि हमने रीड परफॉर्म करना है. द कंटेंट्स ऑफ द स्पेसिफाइड एड्रेस, जो भी एड्रेस आपने स्पेसिफाई किया था उसका जो कंटेंट है आर पुट इनटू द मेमोरी डाटा आउटपुट लाइन. क्योंकि मेमोरी से बाहर जा रहा है तो डेटा आउट लाइन में उसको डाल दिया जाता है. एंड देन थ्रू द बस द डाटा इज ट्रांसफर्ड इनटू द रजिस्टर R1. आई रिपीट, सबसे पहले MAR से मेमोरी एड्रेस लाइन में वैल्यू चली गई, रीड कंट्रोल को 1 कर दिया गया, कंटेंट जो है उसको डाटा लाइन में आउट डाटा लाइन में डाल दिया गया है, एंड देन थ्रू द बस इट इज ट्रांसफर्ड इनटू द रजिस्टर. सो दिस इज नोन एज द रीड ऑपरेशन, एंड कॉन्ट्ररी टू दिस इज कॉल्ड द राइट ऑपरेशन. इसमें कुछ नहीं हुआ है, both the values have been reversed.
R1 पहले लेफ्ट साइड पर था तो वो राइट साइड पर आ गया है, और MAR जो राइट पर था वो लेफ्ट में आ गया है। तो इसमें क्या है, फिर से स्टेप नंबर 1 सेम है। द कंटेंट्स ऑफ MAR विल बी सेंट टू द मेमोरी एड्रेस लाइन। कौन सी मेमोरी लोकेशन पर डेटा को राइट करना है। देन दिस टाइम द control signal write will be set to 1. So what will be the value of the read control will be 0. Then the values of the register 1 are sent over the bus to the data input line. Input line पर आ गया, and then the value is loaded into. कहाँ पर लोड की जाती है, मेमोरी की उस लोकेशन पर जिसका एड्रेस MAR बता रहा है। तो यहां पर हो जाएगी वैल्यू लोड हो जाएगी। So I hope this is very clear to you. So far we have done 3 things. One is called the bus or the register transfer. Then we have done the memory read operation, and then we have done the memory write operation. So these are the 3 operations that we have discussed. So let's move even further. Then this is a kind of a summary of what is being done. For example, B into A, transferring the contents of register B into register A. The next one you can see is transferring the content of AD portion of the register DR into the register AR. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। DR इज द डेटा रजिस्टर एंड AR इज द एड्रेस रजिस्टर। तो अगर हम उसका एरिया स्पेसिफाई कर रहे हैं तो सिर्फ उतना पार्ट ही कॉपी होकर AR के अंदर जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रांसफरिंग सम कांस्टेंट वैल्यू इनटू द रजिस्टर A। जरूरी नहीं है कि हम लोग किसी मेमोरी लोकेशन से या किसी रजिस्टर से ही डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। यू मस्ट बी अवेयर, sometimes we write A is equals to 10. So what is 10? 10 is no memory location, 10 is no variable, but 10 is a constant, so we can also transfer the you can say constant values as well. So this is the page that you can look into that will try and explain what is going around. This is only the summary of the 3 operations that we have done. तो ये बताता है कौन कौन से रजिस्टर्स इन्वॉल्व हैं और किस तरह से हम लोग ट्रांसफर जो है वो शो कर सकते हैं। Okay, so in this slide, how many transfer operations have been discussed? 7 transfer operations have been discussed, and other than that, इसमें कुछ symbols बताए गए हैं, register notations बताई गई हैं that we can use. So next is how many other types of micro operations are available? Register transfer micro operations that we have already discussed. And other than that, there are 3 types of micro operations. 3 तरह के और micro operations हैं जिनके बारे में हम लोग थोड़ा सा brief discussion करेंगे. What are those 3 types of micro operations? One is known as arithmetic, the second one is called logical, and the third one is called the shift micro operation. So basic arithmetic operations क्या हैं, and some kind of a you can say additional arithmetic operations. So पहले हमें basic operations दिए गए हैं और फिर उसके बाद जो है वो एडिशनल अरिथमेटिक ऑपरेशंस दिए गए हैं। इसमें कुछ सिंबल्स हैं जिनके बारे में मैं सिर्फ आपको नॉलेज दे पाऊंगा, बट इन डिटेल बिकॉज दे बिलोंग टू द डिजिटल you can say electronics, so that is something I am not going to study explain in detail, but let us see what are the different types of arithmetic operations that are available. So please focus on this one. This one is quite easy. This one is quite easy. This says that we need to apply addition to the contents of R1 plus R2. Then whatever is the result, that result will be transferred into R3. So I hope this is very easy for you to understand.
The second one is the subtract. Okay, so that means we are going to subtract the contents of R2 from the contents of R1, and whatever is the result, that will be transferred into the register R3. But in certain cases we do not have a direct subtraction, हमें direct subtraction allowed नहीं होती है. So how we achieve the subtraction, that is given in here. ये थर्ड पॉइंट पर हमें बताया गया है कि इफ यू कैन नॉट परफॉर्म द डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन, देन यू कैन परफॉर्म इट लाइक दिस. What is the meaning of this? Please see. R1 minus R2 is equivalent to R1 plus R2 complement plus 1. सो इसका मतलब क्या है, अगर आप R1 माइनस R2 करना चाहते हैं एंड योर सिस्टम ओनली हैज एडर, then you can implement R1 minus R2 with the help of this operation. So that is R1 plus the complement or complement of R2 plus 1. ठीक है. सो व्हाट इज R2 कॉम्प्लीमेंट? अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, तो वी विल सी हाउ वी गो अबाउट इट. बट इट इज वेरी सिंपल. इट इज जस्ट चेंजिंग द, यू कैन से, सिंबल्स फ्रॉम 1 to 0 एंड 0 to 1. ठीक है. तो ये आपकी समझ में आ जाना चाहिए कि एडिशन हम लोग ऐसे कर सकते हैं और सब्ट्रैक्शन हम लोग इन दो में से किसी भी मेथड के साथ अचीव कर सकते हैं. This is simply the complement of the you can say content. So that means this is R2 complement. Complement means, like I already said, changing the you can say bits from 0 to 1 and 1 to 0. So ये कह रहा है कि R2 के contents का complement करके R2 रजिस्टर के अंदर ही सेव कर दीजिए. Next is R2 is equals to R2 complement plus 1. This is the negative of R2. So एक तरह का इसको हम लोग R2 is equals to minus R2 अगर करना चाहते हैं तो हम लोग इस तरह से अचीव कर सकते हैं. Next is incrementing the value of R1 and decrementing the value of R1. So with this we come to the you can say end of this slide, which shows the basic arithmetic operations that can be performed and the corresponding RTL language that we can use for the same. Right. So here is a list of logical operations that you can perform. So what are the logical operations that you might be aware of? Is like and, or, not. So I hope you all are aware of that. You can see all the micro operations listed in here for logic is something that I am not going to discuss, but still some of them we will. For example, f is equal to 0. किसी भी चीज को 0 कर देने का मतलब क्या होता है कि हम लोग उसको क्लियर कर रहे हैं. कई बार हमने इंक्रीमेंट काउंट ऑपरेटर लगाया होता है. काउंट ऑपरेटर, काउंट हाउ मच हैज हैपेंड, हम काउंटिंग शुरू कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 6 एंड सडनली वी वांट टू रीस्टार्ट द काउंटिंग अगेन. तो रीस्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले काउंट को क्लियर करना पड़ेगा 0 से और फिर से इंक्रीमेंट जो है वो स्टार्ट कर देना है. सो व्हाट इज F0? That means we are going to clear the content of F. I hope this is clear. This is AND symbol. ठीक है. तो जैसे हमने लिखा 101 एंड 100, अगर हम एंड करेंगे तो 1 and 0 is 0, 0 and 0 is 0, 1 and 1 is 1. Hopefully we are doing it very fast, so this is the correct answer. So ये आपका एक तरह सा डिजिटल एंड कर देता है.
आई होप दिस इज क्लियर। तो ये उसका इक्वलेंसी बताया गया है, दिस इज ए एंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। सो दैट मीन्स हमने ए को एंड करना है, लेकिन किसके साथ करना है, बी के साथ नहीं, बी के कॉम्प्लीमेंट के साथ। देन दिस इज ट्रांसफर, no need to explain, transferring the contents of A into F. Now this is A complement and B, यानी A का पहले complement निकालिए, फिर उसको add कीजिए and कीजिए B के साथ। This is transfer of B. Now this symbol is for exclusive OR, this is for simple OR, this one is for NOR, and this one is for exclusive NOR, and so on. These are just the you can say various operations that you are already aware of, but once in the exam they ask you a list of logic micro operations, then you should be aware. So that means you need to remember some of these for you to be able to attend from the examination point of view. So these all are called the list of logical micro operations that we can perform. So let's move further. Shift micro operations. So let us try and understand the concept of what is shifting of the bits. थोड़ा सा ध्यान देंगे and then we will be able to understand. For example, मानकर चलिए कि अगर मेरा कोई वैल्यू है that is 1, 1 and 0. When I am talking about the shift micro operation, जब मैं shift micro operation की बात करता हूं, तो इसका मीनिंग क्या है, we are going to shift the individual bits of some register. So shifting can be in two sides, either it can be left or either it can be right. ओके, यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि when we move right, so all the bits are moving towards the right side. When I am saying the left shift operations, then all the values are moving towards the left. So let's see an example of the same. For example, if I say 1, 1 and 0. If I am going to apply the left shift, then what is going to happen is this 0 will come here, this 1 will come here, and this 1 will be lost. Either lost, यहाँ इसका क्या करना है, that I will explain at a later stage. And let us say that if we have again 1, 1 and 0, and we want to perform the right shift, then this one will come here, this one will come here, and this 0 will go out. Whether it goes out or it is placed somewhere else, that we will see. So this is how the shift actually works. लेकिन समझने वाली बात ये है कि the shift micro operations are basically performed for shifting the individual bits either towards the left or either towards the right. Okay, so let's see how many types are there. So what it wants to say is that the shift operation can either be logical, circular or arithmetic. So let's see what is the logical shift. तो लॉजिकल शिफ्ट में आप ध्यान से देख सकते हैं कि लॉजिकल शिफ्ट का जो इनपुट है दैट इज 0। लॉजिकल शिफ्ट का जो इनपुट है वो आपको यहां से दिखाई दे रहा है, दैट इज 0। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस 0, वो हम पिछले एग्जांपल से ही देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द राइट शिफ्ट। हमारा वैल्यू क्या था, 1, 1 एंड 0। तो जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, this one will come here, this one will come here, and what will be the value here, that will be equal to 0, जिसको हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, that is 0, 1 and 1. This is called the right logical shift. The other one is called the left logical shift.
सिमिलर वैल्यू लेते हैं हम लोग, दैट इज 1 1 एंड 0, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, तो दिस 0 विल कम हेयर, this 1 will come here, and 0 will be inserted here. So how do we denote this in the RTL language? This is it. ध्यान दीजिए, SHR and SHL. R and L stands for right and left, and SH stands for shift. और जब हम लोग बहुत ही सिंपल SHR और SHL लिखते हैं, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ लॉजिकल शिफ्ट. ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? द मीनिंग ऑफ दिस इज टू ट्रांसफर or shift, sorry, the shift the contents of the register R2 towards the right, और जो भी रिजल्ट आएगा copy it into R2. So that explains the simple logical shift. So let us move towards the next one. This is known as the circular. सर्कुलर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि जो बिट लॉस्ट हो रहा है, इस बार हम लोग कोई इनपुट नहीं दे रहे हैं, इसके अंदर 0 या 1 ऐसा कोई इनपुट नहीं देते हैं, तो जो भी बिट यहाँ से बाहर जाता है दैट विल बी कॉपीड और रिप्लेस टू द 1 इन द बिगिनिंग. द सीरियल इनपुट इज द बिट दैट इज शिफ्टेड आउट. तो मैं आपको राइट शिफ्ट का एग्जांपल दे देता हूं, सिमिलर टू 1 1 एंड 0. तो अब हम इसका बनाते हैं सर्कुलर राइट शिफ्ट. दिस विल 1 विल कम हेयर, this 1 will come here, and this 0 will be shifted towards this position. तो मैं इसका अब लेफ्ट भी बना देता हूं, दैट इज 1 1 एंड 0. जब हम इसको लेफ्ट शिफ्ट करेंगे तो दिस 0 will come here, this 1 will come here, and this 1 will be shifted to this position. So it will become 1 0 and 1. So what is the symbol that we use to denote the circular left and right is called CIL and CIR. ठीक है, नॉर्मल लॉजिकल शिफ्ट का क्या था? SHL and SHR. दिस इज लॉजिकल शिफ्ट, दिस इज सर्कुलर शिफ्ट. दोनों में डिफरेंस क्या है? नॉर्मल लॉजिकल शिफ्ट में जो इनपुट था दैट वाज 0, लेकिन इसके अंदर इनपुट क्या है? द बिट विच इज शिफ्टेड आउट. जिस बिट को आप शिफ्ट आउट करते हैं दैट बिट इज एक्चुअली बिकम्स द इनपुट स्ट्रीम. So let us discuss the last one. So here we see arithmetic shift. It is meant for signed binary number. Signed binary number क्या होता है? तो सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं कि साइंड क्या होता है. अगर आपको लेट अस सपोज 4 बिट नंबर दिया गया है, पीछे हम 3 बिट कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पर 4 बिट नंबर मान लेते हैं. So what is the value? The value is 0 1 0 and 1. So it means the only the 3 bits which are on the right hand side, they represent the value, whereas the first bit represents the sign. It does not represent the value, instead it represents the sign. And sign means either the value can be positive or either the value can be negative, which means that we are not going to do too much with the sign. Sign को हम लोग कभी भी shift नहीं करेंगे, but only the value will be shifted. I hope this thing is very clear to all of you. So see, the arithmetic shift is meant for signed binary number. साइंड का पहले कोई भी जिक्र नहीं था, ना सर्कुलर में ना लॉजिकल में, लेकिन अरिथमेटिक में साइन आएगा. द अरिथमेटिक लेफ्ट shift multiplies a signed number by 2, whereas the arithmetic right shift divides a signed number by 2. The main distinction of an arithmetic shift is that it must keep the sign of the number same as it performs the multiplication or
डिवीजन। आप जो मर्जी करिए, चाहे आप लेफ्ट शिफ्ट करिए, चाहे आप राइट शिफ्ट करिए, आपको एक ध्यान रखना ही होगा, एंड दैट इज वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द साइंड बिट सेम ही रहेगा। तो ये है आपका राइट शिफ्ट। Let me give you an example. This is your right shift and this is your left shift। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखना है, इन चीज़ों को ध्यान से देखना है कि क्या हो रही है और क्या चीज़ बाहर जा रही है, क्या चीज़ इनपुट आ रही है और कौन सी चीज़ बाहर जा रही है, right? So from here you will be able to understand how the shifting is actually taking place. But the only thing that you should keep is the main distinction of an arithmetic shift is that it must keep the sign of the number the same as it performs the multiplication or division। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। So with this we come to the end of it। और इसका जो एक दिया हुआ है सिंबल दिया हुआ है, you can see the symbol at the bottom। यू कैन सी द सिंबल एट द बॉटम। यहाँ पर सिंबल देखिए, जो नॉर्मल शिफ्ट था दैट वाज शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट, सर्कुलर का क्या था, सर्कुलर लेफ्ट राइट एंड सर्कुलर लेफ्ट, एंड द लास्ट इज ए एस एच आर, ए एडिशनल आगे लगा दिया गया। सो आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, so with this we come to the end of it। Like I said, you are not to explain these things in too much of detail because your syllabus is different from what was studied earlier, because उसमें आगे के topics कम होते थे and we had a lot of detailed explanation about these topics, but that's not happening right now। So with this we come to the end of today's lecture, and in case if you have a brief question you can ask me, otherwise for a question that might require explanation we will see it in the next lecture। So I open this right now for any questions that you want to ask।